Welcome back student, a brand new class of computer fundamental. In this class we are going to revise our digital network essentials. So let's start the revision. Our first question is what is internet and explain the various uses of internet. Internet is basically networks of networks, or in other words we can say that it is a network of networks that share common method for identifying computer. It provides a common set of communication protocol to communicate with two or more computer over the internet. So the Win Cerf is known as the father of modern internet. So what are the uses of internet, or in other words we can say that why we use internet? We use internet for communication. In communication we can send email, photos, or we can share videos all over the internet, all over the world. The next is shopping. In case of shopping we can say that we can easily sell and purchase things over the internet. Searching for information has never been more convenient. We can access some of the most world famous or world largest library from our home over the internet. Education or e-learning is another emerging web technology or web application. We can take classes or host the classes over the internet. Entertainment is options are nearly endless. You can find movies, music, magazines, computer games, and etc. on the internet. Email, we can easily send and receive mail over the internet. Teleconferencing, people can conference or meeting sitting different location with the microphone attached with the computer, and they can share our views over the internet. So what is internet? Or we can say that what is the role of TCP/IP over the internet. Basically TCP/IP transmission control protocol that is used to send the data over the internet. So when we send the data over the internet we follow some rules. First, at the center side computer, it divided the message into packets, and this packets is divided, and this message is divided by the TCP. The serial number is given to each packets. The IP address put the address of the destination of the computer. The destination computer receive the packet in random order. If the packet is lost or damaged over the internet, then we can reassemble the package and send the message. So the main purpose of TCP/IP is this protocol is used to send and receive the data over the internet. Or we can say that the purpose of this protocol is used to make a communication between host and we can say that it is used to communicate, or we can make a communication or connection between server and the client. So what are the advantages and disadvantages? So great access of the information, reduce research time, allow us to communicate over the internet with other people. Global reach enable one to connect over the internet. Publishing document on internet, say paper, a valuable resources of companies to advertisement and conduct business. So disadvantage: cyber crimes, unsuitable and undesirable material, and major source of computer virus. Much of the information is not checked and conduct, or maybe it is incorrect. Message sent across the internet may easily intercepted or opened by the others. So all these are advantage and disadvantage of computers. So the next is web browser. The web browser is a software that is used by the user to see the web pages. Basically web pages or websites. A website is the combination of web pages, and web pages is the combination of HTML tags. So in order to access the web pages we need a web browser. So we have two types of web browser: text only web browser and graphics web browsers. In case of text only web browser, we only see the text. There is no graphics, no animations, etc. on this in this type of web browser. But in case of graphical web browser, we have a concept of multimedia. So browser can show us a picture, a movies, play sound, run video clips, etc. So what do you mean by multimedia? Basically when we talk about the internet, or when we talk about the web pages, a web page is a combination of hypertext, and the hypertext is basically combination of pictures, animations, graphics, audio, videos, all these things, and all these things are called multimedia. The first one is graphics. Graphics are basically pictures or digital format of non-text
information like picture, chart, photo. And the next is animation. Animation means a moving emotions, or we can say that appearance of motion created by a display series of still images. In case of animation, we can say that moving the object. These are animations. Audio. We have when we talk upon the over the internet, we listen the music. All these are audio files and or live videos. Video consist of image displayed motion. Most of the basically videos and animation almost same. In case of animation, we have small graphics that make animation effect. In case of video are the basically moving of picture at very fast speed. So we can use internet to watch live and pre-recorded videos, TV program, etc. So the next question is, what are search engines, or what do you mean by search engines? Search engines are specialized programs that assist you to locating information over the internet. To find the information, we need a facility, or we need a website, and the website like Google, that are search engine. A search engine basically perform 3 actions. The first is spider or web crawler, index, or searching. In case of spider is a computer program that browse the web page and getting up-to-date data of the website. Indexing one, the spider collect the data. Now the next task of indexing. The next task is indexing. The indexer store this information in form of index so that user can access when they need this information. Searching, when the user enter the query to search engine examining the index and provide the information that the user want to see. So the next is email. Basically email is like a postal mail, but in case of email, we can send and receive the letter or message over the internet. So in case of email, we have two things. The first is username, and then @ after that domain name, like class11@gmail.com. In this example, class11 is the username, that gmail.com is the domain name. So our username can be any name, but in case of domain name, it can be a specialized company or specialized name that provides the service of accessing or sending or receiving the email. Like, what are the various used? In case of email, we can send or receive message, we can send or receive photograph, videos, we can send our resumes, we can communicate with other over the internet. Client and vendor can send or use email to order the product and services. All these are uses of emails. Here we have some advantages and disadvantages. Email are fast, easy, flexible, presence in worldwide, and it is very cheap service. But in case of disadvantage, there is a threat of virus, there is a threat of spam mail, and there is the main thing is we need internet to access the email. So what is the difference between email and postal mail? So email, it is the fast medium. We can send voice messages, images, etc. over the email. It is cheaper than postal mail. Receive can send and receive message from anywhere. Email passed from one computer to another computer. But in case of postal mail, it is very slow. It is difficult to send information to other information, like we cannot send voice message, pictures, videos with the help of postal mail. It is expensive as compared to email. Receipt can receive message only at the some marked place in, not everywhere. Postal mail makes stop the different postal station which come on the way, but in case of email, it pass from one computer to another computer. So we have various security threats over the internet. In case of security threat, we can say that not the only authorized person can access our information. Only authorized person can control our access. Only authorized person can design or access control. So all these things are comes in security threats. So components of security, the first is confidentiality. No unauthorized person should able to read or copy the information.
No unauthorized person should able to modify the information. It ensures that user access only those data that are allowed to access. Privacy. It is ensure that individual had right to use the information, allow other to use that information. Steganography, it is the art of hiding the message and aid confidentiality and integrity of data. Cryptography, it is basically science, or we can say that in case of cryptography we can protect our data from intruders over the internet. In case of cryptography, we can convert our data into unreadable form so that no one can read our data over the internet. So what is data communication? A data communication is the exchange of data between two devices using some form of transmission media. And the communication commonly system essentially consists of 5 parts like source, encoder, the channel, decoder, and destination. Source means the person who want to send the data. Encoder, it is used to encode the data so that it can be transferred over the internet. The channel, the basically channel mean in which way it can be telephone line, radio signals, or space signals, or satellite signals. With the help of these signal we can transmit the data. Decoder is basically used to change the encrypted data that is encrypted by the encoder so that the destination can receive the data and read this data. So what are the basic components of communication, data communication? The first is digital signal. In case of digital signal, we can say that we can send electronic data in form of 0 and 1. Analog signal data can be transmitted in form of radio signals like telephone lines. Hybrid is a property that we use both analog signal and digital signal. So basically मेरे पास इन 3 तरह से हम सिग्नल भेज सकते हैं. मेरे पास डिजिटल सिग्नल होगा, या एनालॉग सिग्नल होगा, या मेरे पास हाइब्रिड सिग्नल होगा. नाउ द क्वेश्चन इज चैनल्स, है ना. तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ चैनल. द फर्स्ट इज सिंप्लेक्स चैनल, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स. In case of simplex, there is only unidirection. This means that the data travel only one direction. Like we can say that keyboard only send the data, it cannot receive the data. So in case of half duplex, in this it is send the data in data flow can be in both direction, but only one at a time. Like walkie talkie, there is only one person can talk at the time. After some time the second person can talk, that second person can send or receive our data. The full duplex, in this data flow in both direction at a time, both can transmit or receive the information. Like we can say that is telephone mobile and a mobile. In case of mobile, both can send and receive data at the same time. So the next is, what do you mean by network? A computer network is a group of computers that are connected to each other for the purpose of communication, है ना. तो बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, जब मैंने अपना डेटा किसी दूसरे के साथ शेयर करना होता है तो मेरे पास क्या होगा, मुझे कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है. सो वी कैन यूज द कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. अ कंप्यूटर नेटवर्क इज ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलाउ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद मैनी अदर कंप्यूटर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज. बेसिकली सिंपल से एग्जांपल लेते हैं. मैंने अपनी कोई मैसेज है, मैंने मल्टीपल यूजर्स को भेजना है, तो मेरे पास कोई ना कोई नेटवर्क होना चाहिए. लाइक वी हैव ए व्हाट्सएप इज बेसिकली सोशल मीडिया नेटवर्क है ना. सोशल मीडिया नेटवर्क जहाँ पे हम अपना डाटा जो मल्टीपल लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. तो ये चीज़ है. सो ऑल दीज थिंग्स वी कैन डन विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क. सो व्हाई वी नीड नेटवर्क और व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ नेटवर्क? द फर्स्ट इज कम्युनिकेशन. यूजिंग नेटवर्क पीपल कैन कम्युनिकेट effectively and easily via email, chat rooms, telephone, video conferencing, telephone call, etc. The second is resource sharing. Network allow us to share hardware as well as software. Reliable. A network may have alternative source of supply, like we have multiple CPUs, we have multiple files, we have multiple servers where we can store our data. So one of our server stop working, then the transmission of data cannot be halt. Instant internet access. Computer network provide internet service all over the internet. Basically the one of the best and the finest example of computer network is internet, because we can share
or we can access our data all over the internet, all over the world, anywhere, anytime. So what are the various types of network? The first one is personal area network. The personal area network is formed around the person, basically the network that we created at home. Like we can share our hotspot, we can share our mobile, we can share our PDA, all the network. That network is called personal area network. It is very safe. It is basically short range solution. It is used in small area, but the disadvantage is it establishes a wide connection to other at the same bandwidth and distance limit. बेसिकली जो भी हम मोबाइल के साथ अपना कम्युनिकेशन करते हैं, मोबाइल के साथ हम कोई भी डेटा शेयर करते हैं, दैट्स कम्स अंडर द PAN, personal area network. The next is local area network. A local network is a network that covering small geographical area like a home, office, a same floor or building. So all these things comes under the local area network. Like we can share our resources, like we can share our hard disk, we can share printer, we can share data, CPU, modem, printer. All these things comes under the local area network. A local area network allow for high speed exchange of essential information. It is used to with the help of local area we can increase the productivity. We can share our resources all over the local area network. It provides a facility to share the internet connections. So but the disadvantage, initial cost of local area network is very high. A LAN administrator has the right to check the personal file of the user. Unauthorized user can access important data of an organization. A local area network covers small area like one office, one building or group of building. So we have next is metropolitan area network. A metropolitan area network is a basically bigger version of LAN. Normally use the same technology. It is a cover group of corporate office, city, might be private or public. Metropolitan area like 50 kilometers. Basically metropolitan area, like we have example of our cable, city cable है ना, where we can use जो मेरे घर पे केबल आती है तो उसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का एग्जांपल ले सकते हैं. वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इंटरनेट लिटिल बिट है ना, वायर नेटवर्क जो होता है हमारे पास, तो वो हम ले सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा एरिया कवर करता है. अब ऐसे तो नहीं होगा कि मैं हमीरपुर से लेके ऊना तक अगर मैंने इंटरनेट चलाना है तो मैं हमीरपुर से केबल लेके जाऊंगा ऊना तक. अब उसको कोई तरीका होगा ना, एक अलग वे में किसी तरीके से मैं उस चीज़ को शेयर करूँगा. अगर मुझे केबल ऊना में चलानी है तो हमीरपुर से केबल थोड़ी लेके जाऊँगा, उसका जो मेन ऑफिस होगा वो ऊना में ही होगा. सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ दिस है ना. सो द एडवांटेज इफेक्टिव एंड प्रोवाइड कम्युनिकेशन लाइक हाई स्पीड. जहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पीड चाहिए होती है वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं. इट प्रोवाइड अ गुड बैकबोन फॉर लार्ज नेटवर्क एंड प्रोवाइड ग्रेटर एक्सेस ऑफ वायरलेस एरिया नेटवर्क. अ मैन यूजली एंकरप्ट सेवरल ब्लॉक सिटीज एंड बेसिकली सिंपल सी बात है, हम सिटी केबल की एग्जांपल लेते हैं तो केबल पूरे के पूरे एक सिटी में फैली होती है. तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. The disadvantage, we need more cable to establish metropolitan area network. In metropolitan area it is tough to make secure. हमें सिक्योरिटी का थोड़ा सा इशू रहता है, लेकिन बेसिकली अगर मैं केबल की बात करता हूँ केबल में मुझे इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत भी नहीं होती है. सो द नेक्स्ट इज वाइड एरिया नेटवर्क. द वाइड एरिया नेटवर्क इज ए नेटवर्क और ए सिस्टम connecting city, country and continents. A network that use routers and public communication like we have a concept of internet basically wide area network where we can connect cities, countries all over the world, and we can connect all over the world, and that is the example of wide area network. The large and most well known example of wide area network is internet. So what are the different advantages of wireless area network or wide area network? Cover large geographical area, share software and hardware. We have like example of software like WhatsApp, we have a Facebook. So all these things comes under the wide area network. क्योंकि सर्वर पता नहीं कहाँ पड़े हुए हैं मेरे पास सर्वर, लेकिन उस डेटा को मैं एक्सेस तो कर रहे हैं. मैसेज कैन सेंड वेरी क्विकली टू एनीवन. मैसेज को हम काफ़ी फास्ट जो एक जगह से दूसरी जगह जो हम क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं. द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क. वी नीड ए सिक्योरिटी मैकेनिज्म. वी नीड ए वेरी गुड, वी नीड ए security mechanism so that unauthorized person cannot access our data. So setting up a network is expensive. We have a security the real issue है ना over the wide area network, क्योंकि जब भी हम इंटरनेट पे काम कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई सिक्योरिटी इशू हमेशा रहता ही है. So what is the difference between local area network, metropolitan area network
and the wide area network. The first is features, है ना. What is the full form of local area, LAN, LAN, WAN and MAN? तो local area network LAN stand for local area network, MAN stand for metropolitan area network, and WAN stand for wide area network. Cost. LAN, in case of LAN, cost is less. WAN costly, MAN costly, and WAN is costliest. Because जहाँ पे आप देखिए लोकल एरिया नेटवर्क तो एक बिल्डिंग में काम करेगी तो कॉस्ट कम ही पड़ेगी. मेट्रोपॉलिटन एरिया पूरे शहर को कवर करेगा तो कॉस्ट लिटिल बिट एक्स्ट्रा होगी. लेकिन व्हेन बी केस ऑफ वैन पूरे के पूरे वर्ल्ड को कवर करना तो कॉस्ट तो ज़्यादा ही होगी. रेंज, इन केस ऑफ लैंड वी इट कवर 1 किलोमीटर, मैन कवर अप टू 550 किलोमीटर, बट इन केस ऑफ वैन इट कवर इंटायर कंट्री, है ना, इंटायर अर्थ. स्पीड, द स्पीड ऑफ लैंड इज हाई, द स्पीड ऑफ मैन इज एवरेज एंड द स्पीड ऑफ वैन इज लो. बेसिकली हम स्पीड कंपेयर करें नेटवर्क की. लैंड पे नेटवर्क की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वैन पे नेटवर्क की स्पीड जो होती है हम देख ही सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें इशू आ जाते हैं मेरे पास. लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ कहाँ करते हैं? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सिटी, स्मॉल सिटीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, बट वाइड एरिया नेटवर्क कंट्रीज़ में. सो मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है लैन की, मेंटेन करना लैन को आसान है. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को मेंटेन करना आसान है एज़ कम्पेयर टू, डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क. बट वैन को अगर कंपेयर करते हैं हम, मेंटेन इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन लोकल एरिया नेटवर्क एंड metropolitan area network. So all these things are comes under the network. So we use basically 3 types of network: local area network, wide area network, and metropolitan area network. So the next thing is, what is intranet? We have 2 things now, internet and intranet. Both the things are different. The internet is a private network which gives employee in a company to be ability to organize information, manage documents, share calendar. It is a normally run in a client server environment in local area network. In internet every computer is connected through the LAN. Basically इंटरनेट में क्या है ना, हम सिंपल से एग्जांपल लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो भी आपस में कम्युनिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, वो सारा का सारा अगर हमने कंप्यूटराइज करना है तो किसकी हेल्प से कर सकते हैं? वो इंटरनेट की हेल्प से कर सकते हैं. वहाँ पे मुझे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं, कि अगर इंटरनेट पे है दैन डाटा कम ओवर द वाइड एरिया नेट, है ना. सारा का सारा डेटा कहाँ आ जाएगा? इंटरनेट पे आ जाएगा, मीन अवेलेबल फॉर एवरीवन. लेकिन कंपनीज में क्या होता है, जो भी डेटा होगा वो कहाँ रखना होता है? उन्होंने प्राइवेट रखना होता है. तो वहाँ पे वो अपना क्या करते हैं, एक प्राइवेट नेटवर्क बना लेते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रानेट. सो एडवांटेज: फास्ट, इजी एंड लो कॉस्ट टू इम्प्लीमेंट, अलाउ कनेक्टिविटी विद अदर सिस्टम, असेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन. बेसिकली देखिए कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इंप्रूव होता है, क्योंकि देखिए कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, अगर मेरे पास एक ऑफिस है जिसमें 10 फ्लोर है, 10 फ्लोर की इन्फॉर्मेशन अगर फर्स्ट फ्लोर से 10th फ्लोर तक भेजनी है, अगर कोई पर्सन लेके जाता है कितना टाइम लगता है? काफ़ी टाइम लगेगा. लेकिन अगर वही चीज़ आगे लोकल एरिया वेबसाइट बनी है मेरे पास, लोकल एक कोई भी वेबसाइट बोलते हैं, एक पोर्टल बना है, तो वहीं पर उस इन्फॉर्मेशन को वो देख सकता है, तो वो चीज़ आ जाती है हमारे पास. डिसएडवांटेज: थ्रेट ऑफ शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, लॉस ऑफ कंट्रोल, अनऑथराइज्ड एक्सेस, लिमिटेड बैंडविड्थ एंड हिडन एंड अननोन कम्प्लेक्सिटी ऑफ कॉस्ट. बेसिकली देखिए जब हम लोकल एरिया पे काम कर रहे होते हैं तो मुझे कई इशू आ जाते हैं. एक तो स्पीड, दूसरा अनऑथराइज्ड एक्सेस, क्योंकि देखिए जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इतने सिक्योर नहीं होती है मेरे पास लोकल एरिया नेटवर्क पे. तो देन बैंडविड्थ काफ़ी कम होती है. सो ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द इंटरनेट. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट. तो इंटरनेट क्या है हमारे पास? वाइड एरिया नेटवर्क है. इंटरनेट किसी के प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का अपना होता है. इंटरनेट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेट्स, बट इंटरनेट असेस internets with specific restrictions. Number of internet users are very high and number of users is limited in case of intranet. Internet contains various sources of information, but in case of intranet we have specific information. Anyone can access the internet, but accessible on the organization employee or accesses within the employee of the organization. It is not safe as compared to intranets. Internet is safe and secure. Internet is a public network, but intranet is private network. So the next is we have transmission video. Like we have learned, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि मैं डेटा यहाँ से वहाँ सेंड करूँगा, कैसे सेंड करूँगा, ट्रांसमिशन वीडियो यूज़. सो अगर मैंने एक जगह से डेटा दूसरी जगह पर डेटा सेंड करना होता है
तो मुझे क्या चाहिए था, ट्रांसमिशन मीडिया। मेरे पास दो तरह के ट्रांसमिशन मीडिया आते हैं। द फर्स्ट इज गाइडेड मीडिया, वी कैन से दैट वायर मीडिया, एंड द सेकंड इज अनगाइडेड मीडिया, वी कैन वायरलेस मीडिया। So transmission media can be defined as anything that carry the information from source to destination। सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जो भी इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है वो किसकी हेल्प से होगी, मेरी मीडिया। मेरे पास गाइडेड मीडिया है, गाइडेड मीडिया में क्या होगा, मेरा जितना भी डेटा होगा सेंड होगा विद द हेल्प ऑफ वायर। वी हैव बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ वायर, ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्सियल केबल्स, एंड द नेक्स्ट इज फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। विद द हेल्प ऑफ दीज केबल वी कैन सेंड द डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। देखिए ट्विस्टेड पेयर केबल जो मेरी घर पे इंटरनेट की केबल होती है वो मेरी कौन सी केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल। कोएक्सियल केबल जो मेरे केबल नेटवर्क की केबल, जो केबल की टीवी हो, केबल टीवी की होगी, डिश की केबल होती है, वो कौन सी होती है मेरे पास, कोएक्सियल केबल। एंड द फाइबर ऑप्टिकल केबल जिसकी हेल्प से जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को डेटा मिलता है। जैसा अगर एयरटेल मुझे इंटरनेट सर्विस दे रहा है तो एयरटेल को भी अपने लिए तो कहीं से इंटरनेट सर्विस चाहिए होगी ना, तो वो सर्विस वो किसके थ्रू, उनके पास जो केबल्स के थ्रू आती है वो कौन सी केबल्स होती है मेरे पास, फाइबर ऑप्टिकल्स, क्योंकि इनके अंदर जो डेटा सेंड होता है वो इन फॉर्म ऑफ लाइट, और लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। बट इन केस ऑफ वायरलेस मीडिया वी कैन यूज़ रेडियो सिग्नल्स, माइक्रोवेव सिग्नल, इंफ्रारेड, सैटेलाइट्स, ब्लूटूथ, वाईफाई, वाईमैक्स, ऑल दीज थिंग्स आर कम्स अंडर दी हमारे unguided media। So we will discuss these guided and unguided media in next class। So thanks for today, see you next lecture। I hope you can understand what we learned today। If you have any problem you can contact me। So thanks for today, see you next class and have a nice day।